Hi guys, how are you? And great to see you all after so many days, almost a week now. So I was not here for a week, I was traveling, and a belated happy Diwali to all of you and lots of festivities to all of you. But as all of you know, it's a very crucial time. आप सब लोगों के लिए बहुत ही crucial time चल रहा है ये, because your exams are just around the corner and we are doing 3D geometry बच्चों. And very soon I am going to start my 45-day sprint for JEE Mains. जो last year मैंने 30 days का किया था, which became very very popular among kids. This year I am extending it. I'll do a 45 days sprint to cover all the topics of mathematics, starting from your 11 topics, algebra, coordinate geometry and all these topics, to again revising the 12th as well. ठीक है? More details about it in next 1 or 2 days. Okay, but today बच्चों we are doing 3D geometry and today we will be learning some very interesting concepts related to planes and the lines. I hope you remember all the concepts that we have learned till now. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Let us move ahead. And बच्चों, do press on the like button if you understand the concepts. It's a feedback for me. And if you are new, please do subscribe by pressing on the bell icon. And don't forget to share with your friends who you think can benefit from Vedantu classes. Right? चलो आ जाते हैं. Yes, yeah, great to see all of you. आ जाओ. सर एक चैप्टर में कितने क्वेश्चंस करने चाहिए? At least 50 to 100 at least. चलो, but let's come and let's learn this. So बच्चों, as I've been telling you that vectors is a very important topic and you get almost 10% of the questions in JEE from vectors and 3D. Higher percentage of the questions come from 3D, almost 7%, and almost 3% of the questions come from vectors. So hence it is a very very important topic. Okay, chalo. And some students are asking a few questions. Beta, wait, let us move ahead, let's start learning and then we will get into your doubts as well. Okay, chalo. Let us move ahead. These are the kind of problems that we are going to learn to solve today. The problems related to projection, the problems related to image about a line, image about a plane, image along a line, perpendicular to a line. All these things are very important concepts for JEE, which we are going to learn today. So a problem like this. Shubh is asking, sir, ye kab tak khatam hoga? It's almost the end. It's almost the end, Shubh. We have covered almost all the concepts of vectors in 3D. So we are doing JEE problems today. Lot of JEE problems. Now, this is distance of a point from a plane measured along a line. A very very important concept we are going to learn today. So it's your JEE Mains 2016 problem, right? And then we'll do JEE Mains 2017 problem as well. All right? चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं. We are going to learn these problems. We are going to learn concept of distance between two planes and so on. Okay, चलो आगे बढ़े. Now let us begin with a very simple concept of angle between two planes. All right, इसको ध्यान से सुनना बच्चों. So try to visualize. Imagine there are two planes. एक plane बनाता हूँ मैं. Look at this. So let this be a plane. So let this be a plane. As all of you can see, it is a plane, right? And let there be another plane. Let me make another plane. For example, a plane say like this. So these are the two planes. Can you visualize these two planes? So these are the two planes, imagine. Right? So I hope you can imagine these planes. So these are the two planes, right? And they intersect at a line. ये intersect हो रहे हैं, दो planes are intersecting here. These two planes are intersecting here. Now the question is angle between these two planes. What is the angle between these two planes? Say the angle between these two planes is theta, right? The angle between the first plane and the second plane, say, is angle theta. Can you visualize this? Say for example, this is a laptop. So laptop is actually two planes, right? So look at this. So this is a plane, this is one plane, this is another plane. We are talking about the angle between these two planes. We are talking about the angle between the two planes, right? Remember one thing, the angle between two planes is same as the angle between their
नॉर्मल्स, द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स. बस ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है. सो व्हाट आई एम सेइंग, इमेजिन अगर मैं साइड, इफ आई एम लुकिंग एट अ प्लेन फ्रॉम साइड, दिस इज प्लेन 1, राइट, एंड दिस इज अ प्लेन 2. लेट मी मेक द सेकंड प्लेन. दिस इज प्लेन 2. इफ यू लुक फ्रॉम द साइड, दो प्लेन्स को साइड से देखो. नाउ देयर कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मल्स आर, से नॉर्मल टू द फर्स्ट प्लेन is this. So this is a normal to the first plane. So let me call it n1. So this was the plane 1, right? Now say there is normal to the other plane. So this is the normal to the other plane. Say this is n2 and this is the plane 2, right? What the important concept here is, angle between the two planes is same as the angle between their normals, right? So angle between the two planes is same as the angle between their normals. तो पहले प्लेन का नॉर्मल और दूसरे प्लेन का नॉर्मल, इनके बीच का जो एंगल है ना, that will be same as the angle between the planes. Does that make sense to you बच्चों? ये बात समझ में आई सबको? So if a equation of a plane is given to you, then you know the equation of the normal, you know the direction ratio of the normal. Very simple. मान लो इस प्लेन की इक्वेशन है a1x plus b1y plus c1z is equal to d1. So if this is the equation of the red वाला plane, so what is the normal here बच्चों? नॉर्मल बच्चों क्या हो जाएगा? a1 b1 c1 किस क्या रिप्रेजेंट करता है? a1 b1 c1 represents the direction ratio of the normal. नॉर्मल क्या हो जाएगा बच्चों? नॉर्मल विल बी a1 i cap, b1 j cap and c1 k cap. Agree? Similarly, if this plane is a2x b2y c2z, this normal will be a2i b2j c2k. ये नॉर्मल पता है, ये नॉर्मल पता है. Take the dot between the two to get the cos theta. Right? Now let us learn it through a problem. Right? Let us learn it through a problem. ये concept है, concept को रखते हैं यहाँ पे. Let's see a problem based on this. Find the angle between these two planes. Let's do the question, angle between these two planes. Do it very quickly. Aniket is asking, sir, revision series कब से start हो रही है? Very soon, within a week. Aniket, within a week. More details about the 45 days sprint in next couple of days. Satyam, I missed you so much. I too missed all of you very much. I was traveling the entire week. हाँ, आ जाओ. क्या बोल रहा है? This is one normal. Sorry, this is one plane. This is another plane. Two planes are given to you. If a plane is given to you, say if this is a plane, right? If its equation is 2x plus 3y minus z is equal to 7, then बच्चों what do you know? You know that the normal, say this is normal n1, then n1 will be represented by n1, the normal के direction ratios will be 2, 3, minus 1. तो normal कितना हो जाएगा? 2i plus 3j minus k. ये तो हो गया normal, right? To the first plane. Then what do you know? You know the second plane. You know there is a second plane. Say second plane is say like this. So this is another plane, right? And the equation of the other plane is x plus y plus z is equal to 7, right? So you know that the normal to the other plane is this normal. So this normal is say n2. n2 बच्चों कितना हो जाएगा? 1, 1, 1. कितना हो जाएगा? I plus j plus k. What have we learned? We learned that the angle between the two planes is same as the angle between their normals. Very simple problem. Angle between the normals all of you can do. So you know this vector. Can you not find the angle between the two vectors? Very simple. What is the angle between the two vectors बच्चों? Cos theta is equal to n1 dot n2 upon modulus of n1
मॉड्यूलस ऑफ n2. बस वेरी सिंपल कैलकुलेशन, ऑल ऑफ यू नो. सो n1 डॉट n2 बच्चों कितना हो जाएगा, i गेट्स मल्टीप्लाइड, j गेट्स मल्टीप्लाइड and k gets multiplied. So 2 into 1 2, so 2 into 1 plus 3 into 1 plus minus 1 into 1 अपॉन इसका मॉड्यूलस अपॉन इसका मॉड्यूलस. इसका मॉड्यूलस बच्चों कितना हो जाएगा, √3. एंड व्हाट विल बी द मॉड्यूलस ऑफ दिस, 3 square 9 plus 1 10 √14 if I am not wrong, right? ठीक है, कुछ गलत किया मैंने, एग्री? तो बस उससे डिवाइड कर दो, दैट विल बी योर cos थीटा, दैट्स इट. तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन द प्लेन्स cos थीटा इज इक्वल टू दिस, राइट? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, मैंने कैलकुलेशन चेक कर लेना, आई माइट हैव डन सम कैलकुलेशन मिस्टेक बट यू कैन सी द कैलकुलेशंस हियर. So cos theta is this. So 4 upon √14 into √3, that is cos inverse of 4 by √42. ठीक है, ये क्या मैंने कुछ गलती किया था कि ठीक था ना, ये 14 3 and this is 3 4 5 minus 1 that is 4 upon √42. Clear? Clear है सबको ये? Any doubt? बच्चों, is this clear to all of you? Yes or no? Is it clear to all of you? Yes or no? Amarnath करेंगे, we'll do the concepts, don't worry. Now let us move ahead. So this is the general. So this is the general result that you can remember. The general result बच्चों is what? The general result is if the planes are given to you, this is the plane 1 and this is the plane 2, then angle between them cos theta is given by a1 b1 c1 are the direction ratios of the normal to the first plane, a2 b2 c2 are the direction ratios of the normal to the second plane, unka dot. So a1 a2 b1 b2 c1 c2 modulus of the normal modulus of the normal से divide कर देंगे, exactly what you have done in the previous question. So all clear till here, let us move ahead. Now let's do an interesting problem. अच्छा, one more thing बच्चों, if two planes are perpendicular, तो बच्चों condition क्या होगी, for the two planes to be perpendicular the numerator will be 0, cos theta is equal to 0. So a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0, then it will mean what, that the planes are perpendicular planes, a1 a2 b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0, then planes are perpendicular. ठीक, चलो, now let's move ahead. Now let's do a angle between a line and a plane. Let's try to understand the concept of a angle between a line and a plane. Very simple बच्चों, ध्यान से सुनना. What is given to you? A plane is given to you. Let me explain this to you. देखो, what did we learn till now? We learned angle between two planes. Now angle between one plane and one line. So imagine this is the plane. Can you see the plane here? So this is the plane and its equation बच्चों is this. This is the equation of the plane. This is the equation of the plane. Agree? If you know the equation of plane, then do you know the equation of the normal? You know the normal का direction is what? The normal का direction ratio is a2 b2 c2. तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, a2 I plus b2 j plus c2 k. So this is the normal to the plane. Now there is a line. So imagine there is a line. Imagine there is a line. तो यहाँ पे एक line है. So there is a line here, right? And the equation of line is this. What is the equation of line? X minus x1 upon a1, y minus y1 upon b1, z minus z1 upon c1. This is the equation of line. What do you know बच्चों? If the equation of line is in this format, तो बच्चों what do you know? You know that आपको पता है कि a1 b1 the denominator, right? a1 b1 and c1, this represents the direction of the line, ठीक है, to which the line is parallel to, yes or no?
अरे कहाँ चले गए तुम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे और बाइनोमियल पे? सब करा दूंगा बेटा. आई विल स्टार्ट विथ 11 टॉपिक्स इन द रिविजन. आई विल स्टार्ट विथ 11th के टॉपिक्स, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आई विल डू एवरीथिंग. बट प्लीज अभी 3D कर लो, इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सत्यम, yes, when I start the 45 day sprint, then daily classes, it will start within a week. It will start within a week. ठीक है. Okay, so don't worry, I will revise everything for you guys, so don't worry at all. But right now please focus on ये concepts important है बच्चों. 3D is important. Okay. हाँ, so क्या पता है आपको? आपको पता है कि ये लाइन की जो डायरेक्शन है ना, तो आपको एक तरह से वेक्टर पता है. You know this vector. What is this vector बच्चों? This vector is a1i प्लस b2j प्लस c2k. सो आपको क्या क्या पता है? व्हाट डू यू नो? यू नो द नॉर्मल वाला वेक्टर टू द प्लेन. यू नो द दिस वेक्टर विच इज पैरेलल टू द लाइन. आपको क्या चाहिए? यू वांट एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द लाइन. आपको चाहिए बच्चों ये वाला एंगल. यू वांट दिस एंगल थीटा. you want the angle theta, but what I can calculate बच्चों is this angle. What is this angle? This angle is 90 minus theta. ये एंगल बच्चों क्या है? 90 minus theta. So you know this direction. So what can you find out? You can find out cos of 90 minus theta is this dot this normal dot the direction of the line. तो बच्चों क्या हो जाएगा? This will be a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root of a1 square plus b1 square plus c1 square, a2 square plus b2 square plus c2 square. समझ में आया सबको ये? तो फिर से रिवाइज करते हैं. What was given to you? A plane was given to you. तो equation of plane. Since you knew the equation of plane, so you know the equation of the normal, direction of the normal, which is a2 b2 c2, a2 b2 c2, coefficients of x y z, I j k, right? Since you know the equation of line, so denominators a1 b1 c1 denominators, they represent what? The direction of the line. तो आपको line का direction पता है, आपको normal का direction पता है, आप उनके बीच में angle निकाल लो. But that is not the angle that you want. That is 90 minus theta, because this is the theta. This is the angle that you wanted. समझ में आया? Now if these things are clear to you, बच्चों ये concepts clear हैं आपको? If these concepts are clear to you, are you ready to solve an application of this in a JEE problem? Right? So now I will take a problem of JEE where these concepts will be applied. Let us see if you can solve that problem. All right? Ready? चलो, तो इसको लेके जाते हैं इन अ प्रॉब्लम नाउ. तो ये तो अपने कर लिया. दिस वी हैव डन. नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम बच्चों. दिस इज अ JEE मेंस 2018 प्रॉब्लम. दिस इज 2018 प्रॉब्लम, लास्ट टू लास्ट ईयर. रीड दिस प्रॉब्लम वेरी केयरफुली. आई वांट यू टू मेक अ डायग्राम ऑफ इट. अगर आप लोगों ने डायग्राम बना लिया, ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. सी इफ यू कैन मेक अ डायग्राम ऑफ इट. The length of the projection of the line segment joining the points this and this on the plane. Projection of भारत. इसका शॉर्टकट बताओ. बेटा हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता. If you know the concepts, that itself is a shortcut. Yes, you can download the PDF notes of this class. Yes. ठीक है, आ जाओ. अब look at this problem statement. डायग्राम बनाया बच्चों? कुड यू मेक द डायग्राम? बनाओ ऑल ऑफ यू. आई नो द प्लेन तो मैं बना देता हूं. x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 7. अब बोल रहा है देयर आर 2 पॉइंट्स. चलो भैया 2 पॉइंट्स भी बना देते हैं, बिग डील. सो वी कैन मेक 2 पॉइंट्स ऑल्सो, है ना? सो लेट्स टेक 2 पॉइंट्स. 1 पॉइंट इज दिस, one point is say this, right? So the points are 5. say एक point है P, एक point है Q. P is 5 minus 1 4 and Q is 4 minus 1 3. चलो 2 points ले लेते हैं PQ,
राइट ये बोल रहा है पी क्यू का प्रोजेक्शन, द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू ऑन द प्लेन। अच्छा बहुत सिंपल है ये, नॉट अ बिग डील। कैसे? देखो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इट्स लाइक द प्रॉब्लम इज लाइक दिस, प्रॉब्लम इज इमेजिन दिस इज अ प्लेन, imagine this is a plane, imagine this is the line joining the 2 points। projection मतलब क्या होता है बच्चों, this length cos theta, this length cos theta is the projection। ये ना, अगर ये angle between this and the plane is theta, then this length cos theta is all that you want, right? तो बस उस पर फोकस करेंगे अपन। तो एक cos theta कहाँ से आएगा, where do I get the cos theta from? very simple, what you know बच्चों is this, what you know is I know that the normal to the plane, ये I know this direction बच्चों, you know this direction, yes or no? You know this direction, normal to the plane, you know this direction is the coefficient of x, y and z 1 1 1 I j k। so ये normal बच्चों कितना है, I j k, 1i 1j 1k। I do not know what I want is बच्चों, what do you want? You want this, you want, if you want this, what is this? This is the projection बच्चों, this is the projection that you want। so if this angle is theta, if this angle is theta, right, so what your answer is, your answer is pq cos theta, this is your answer, pq cos theta, agree? बट मुझे pq तो नहीं पता, मुझे cos थीटा नहीं पता। हाउ कैन आई फाइंड द cos थीटा, उसके ऊपर आ जाओ, अरे हो जा भाई। हाँ, हाउ कैन आई फाइंड cos थीटा, आई कैन नॉट फाइंड द cos थीटा, बट व्हाट आई कैन फाइंड इज दिस एंगल 90 माइनस थीटा। मुझे pq की डायरेक्शन पता है, कैन यू टेल मी द वेक्टर pq, व्हाट इज वेक्टर pq? दिस माइनस दिस माइनस दिस will give me vector pq, yes or no? this minus this कर दूं, 4 minus 5 minus I minus 1 plus 1 तो 0 जाएगा, 0j, right, plus 3 minus 4 minus j minus k, this is pq direction। then what you know is n direction, normal हो गया I j k। Can I take the dot of these two? PQ dot n will give me cos theta। तो मेरे पास बच्चों क्या आ जाएगा, cos of 90 minus theta। बच्चों ये एंगल क्या है, this angle is 90 minus theta। Can you find out cos 90 minus theta? Cos 90 minus theta will be PQ vector dot n vector upon mod of PQ mod of n। बस cos 90 माइनस थीटा आ जाएगा, मतलब साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा बच्चों, तो cos थीटा आ जाएगा। इफ यू गेट साइन थीटा, कैन यू फाइंड आउट cos थीटा? सभी निकाल सकते हो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos थीटा। यू कैन फाइंड आउट PQ। व्हाट इज PQ? द डिस्टेंस, you can find out the distance between this point and this point। so find out PQ, find out cos theta, multiply the two is your answer। मेथड समझ में आया कि नहीं आया? कुड यू विजुअलाइज बच्चों, कुड यू विजुअलाइज? इट्स अ सिंगल लाइन प्रॉब्लम, इट्स नॉट लेंदी। भारत कहाँ से लेंदी है बेटा, एक डायग्राम ही तो बनाना है, बाकी करना क्या है। दिस यू ऑलरेडी नो, PQ it's very clear, all you need to do is simply find out this, very simple, it will take what 10 seconds to find out this। cos theta आ जाएगा, PQ distance formula, big deal, this problem should not take 45 seconds to solve। ठीक है, clear है? so what is the answer? now let me show you the answer। so answer आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा answer। so some students were saying answer A, yes answer is A। answer क्या आ जाएगा, cos of pi by 2 minus theta, right, cos of pi by 2 minus theta will come out to be root 2 by 3, है ना, that is which is actually equal to sin theta। और sin theta आ जाएगा तो cos theta आ जाएगा। so if sin theta is known to you, sin theta कितना आ गया बच्चों, this is the triangle, sin theta is root 2 by
√3, then what will be cos theta? Yeah, 1 minus sin square theta. Cos theta बच्चों कितना हो जाएगा? Under root of 1 minus sin square theta. So you will get cos theta. And what is this distance AB? This distance AB बच्चों आ जाएगा आपके पास कितना? AB will come out to be √2. So √2 multiplied by cos theta, right, will give you what? √2 by 3. Agree? Yes. So it will come out to be 1 by √3. है ना? ये आ जाएगा. This is 1. Agree? So cos theta कितना हो गया? 1 by √3. So 1 by √3 into √2, that is √2 by 3. Agree? Got it? Yes. क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? अगेन सी बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूं, वन अप्रोच दैट नेवर फेल्ड मी, विच आई ऑलवेज स्टक टू एंड विच बच्चों को रियली हेल्प करता है ऑलवेज इन एनी प्रॉब्लम ऑफ वेक्टर्स और 3D. बच्चों, फर्स्ट मेक अ डायग्राम, विजुअलाइज इट. इट विल टेक 10-15 seconds टू डू, बट वंस इट इज क्लियर, बच्चों बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है. जो दिखता है वो करना होता है ना. वॉट एवर दैट यू सी इज ऑल दैट यू सॉल्व. It's not algebra where you can't see anything. It is vectors. Here you can visualize. So please make a diagram, visualize. Problems are very simple after that. ठीक है? चलो. Now let us move ahead. Now we are going to solve some problems starting with a line. तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ? ध्यान से सुनना. I will start with perpendicular distance from a point on a line. Right? देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ. So a line is given to you. So imagine a line is given to you. I will start with a line and then we'll go into the planes. But this is one of the most popular variety of problems in JEE, right? ठीक है? तो आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, मान लो. लाइन की इक्वेशन क्या है? से x minus x1 upon a1 is equal to y minus y1 upon b1 is equal to z minus z1 upon c1. This is the equation of line. ठीक है? मान लो आपको एक पॉइंट गिवन है. पॉइंट इससे x1 y1 z1. आपको क्या चाहिए? मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हियर. प्रॉब्लम नंबर 1. You want the foot of the perpendicular. Say this point is P. This point is P. If you drop a perpendicular from the point P on a line, तो ये पॉइंट जो बच्चों आपका आएगा ना Q, इसको हम बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द लाइन. सो दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. तो सबसे पहले तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकालें? दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1. एक बार फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया तो PQ बच्चों क्या है? PQ is the perpendicular distance. Perpendicular distance from a point to a line. This distance is PQ. This distance is PQ. Right? उसके बाद हम निकालेंगे इमेज. उसके बाद हम निकाल सकते हैं एक और टाइप की प्रॉब्लम है. ये पॉइंट है R. R को हम बोलते हैं इमेज ऑफ अ पॉइंट. इमेज ऑफ पॉइंट P, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू गिवन लाइन. ठीक है? सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. बच्चों, हाउ मेनी प्रॉब्लम्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हियर. प्रॉब्लम नंबर 1, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. प्रॉब्लम नंबर 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन. प्रॉब्लम नंबर 3, इमेज ऑफ द पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू द गिवन लाइन. राइट? इमेज क्या होता है? अगर ये मिरर है, हैड दिस लाइन बिन द मिरर, तो इसका इमेज कहाँ होगा? सो बेसिकली दिस एंड दिस इज सेम. Q is the midpoint between P and R. Now all these problems, the way to solve is only one. ठीक है बच्चों? क्या है तरीका? सबसे पहले क्या करो, आपको याद है? डू यू रिमेंबर? दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंटेड द इक्वेशन ऑफ लाइन. x minus x1 upon a1 is equal to y minus y1 upon b1 is equal to z minus z1 upon c1 is equal to lambda. Do you remember? सबसे पहले हमने ये किया था. ये लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? दिस लैम्डा इज अ पैरामीटर
which tells you any point on the line, right? So any point Q on the line can be represented as, ध्यान से सुनना बच्चों, very very important, any point Q on the line can be represented as, A को उधर ले जाओ और x1 को उधर ले जाओ, so you will get x कितना आएगा बच्चों? What is the x that you will get? What is the x आएगा a1 lambda plus x1. So this is the x coordinate of any point Q on the line. What is the y coordinate? What is the y coordinate of any point on the line? बच्चों क्या हो जाएगा? b1 lambda plus y1. And what is the z coordinate similarly of any point on the line? बच्चों वो हो जाएगा c1 lambda plus z1. समझ में आया? तो प्रॉब्लम का स्टेप 1 क्या है बच्चों? स्टेप को सुन लो ध्यान से, ये प्रॉब्लम बहुत ही स्टैंडर्ड है. इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम. You need to understand the method because problem is super simple. Step 1, using the equation of line, using the lambda, write down the foot of the perpendicular, या take any point Q on the line in this format. एक point आ गया. अगर ये point foot of the perpendicular है, if this point is foot of the perpendicular, then बच्चों क्या होगा? तो बच्चों क्या होगा? If it is foot of the perpendicular, then PQ dot what is the direction of the line बच्चों? What is the direction of the line? हो जा the direction of the line बच्चों क्या है? A1 B1 C1. So the direction of the line, a vector which is parallel to the line is represented by बच्चों what? A1I plus B1J plus C1K. All of you remember this? We have done this in so much depth in straight line. तो बच्चों क्या क्या पता है आपको? लाइन की डायरेक्शन पता है. This is the direction of line which is A1I B1J C1K. आप PQ वेक्टर निकाल लो. Can you find out PQ वेक्टर? This minus this PQ वेक्टर. So PQ वेक्टर dot direction of line बच्चों ये कितना होगा? 0 होगा. दिस विल बी 0. सो PQ कैसा आएगा? दिस माइनस दिस. ठीक है. अच्छा पॉइंट ये x1 y1 था तो बच्चों दूसरा ले लो. दिस इज x2 y2 z2. नो कंफ्यूजन, राइट? तो दिस माइनस दिस विल गिव यू PQ वेक्टर का डॉट. दिस विल बी 0. दिस विल गिव यू लैम्डा. दिस विल गिव यू लैम्डा. आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी. वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा तो बच्चों आपको क्या मिल जाएगा? जैसे ही आपको लैम्डा मिला, एज सुन एज यू गेट द लैम्डा, राइट, आपको बच्चों क्या मिल जाएगा? फॉर PQ टू बी परपेंडिकुलर टू द लाइन you will get a particular value of lambda and that lambda will give you the point Q. ठीक है. तो बच्चों आपको यहां से मिल जाएगा Q. You will get Q. एक बार Q मिल गया आपको, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व. Q मिल गया बच्चों तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल गया. When you get foot of the perpendicular then PQ distance is the perpendicular distance. And what is the image? बहुत सिंपल है. You know this point. Using the midpoint formula you can get the point R also. Using the midpoint formula, the midpoint of R and P is Q, so you can get R as well. Very simple. Agree? Bachcho, how many of you understood this? We will do the problems now. आज कैमरा इतना सैचुरेटेड हाई कॉन्ट्रास्ट क्यों है? यस यू आर राइट, आई एम ऑल्सो रियलाइजिंग द सेम. कर लेंगे उसकी सेटिंग, कुछ मैंने चेंज कर दी होगी. Yes, Atif, very soon I'll start taking some revision classes in the long term batches also. ठीक है. I'll share the schedule of all these things within a week's time. इसी वीक इसी मंथ होगा, है ना? चलो अब आ जाओ. Now perpendicular distance of अब ये करो जरा प्रॉब्लम. Do this problem now. पूरा ड्यूरिंग द रिवीजन राउंड, ड्यूरिंग द रिवीजन स्प्रिंट. ठीक है. थैंक यू सत्यम.
सर कैन यू आस्क टीम टू अपलोड प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस ऑफ KVPY 2018? यार एक काम करो, एप्लीकेशन बिहाइंड एक्शन, जस्ट गो टू वेदांतु यूट्यूब एंड वहाँ पे सर्च करो वेदांतु KVPY. You will get lots of classes, some of my classes of last year as well, where I have solved lots of problems, important problems of KVPY. उतना भी रिवाइज कर लोगे, it is more than sufficient. Just go through the classes which I have taken last year on KVPY. Just search for Vedantu Pulkit KVPY on YouTube. You'll get lots of my classes there. It talks about the important topics and I have solved lots of problems. उतना कर लो बहुत है. Otherwise, just keep focusing on what you are learning for your JEE. That's it. हाँ आतिफ, डोंट वरी, करते जाओ, जस्ट कीप डूइंग. हाँ आ जाओ, अभी क्या कर, आई होप यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम. नाउ आई विल जस्ट क्विकली रिवाइज इट. फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P to the line this. So what you know, quick, very quick. So you have a line. Now speed is important because the method is very simple. So what does this represent, bachcho? This represents the direction of the line. So you know the direction of the line. So the direction of the line is represented by 2 minus 3 8. So this direction is 2i minus 3j plus 8k. This is the direction of the line. Now find the perpendicular distance from this to the line. तो एक point आपको दे दिया. So there is a point P which is 1 0 0. यहाँ से you dropped a perpendicular. This point is Q, right? This point is Q. Now how do we write the Q, बच्चों? How do you write the Q? Think of it as lambda equal to lambda, right? Find out x, y, z. X, y, z. It represents any point on the line. तो चलो मान लेते हैं a point Q on the line is 2 lambda plus 1. X की वैल्यू, y की वैल्यू will be minus 3 lambda minus 1 and the z will be 8 lambda minus 10. Agree? Now to find out the lambda, बच्चों क्या करोगे, आप करो PQ vector dot the direction of the line, that is 2i minus 3j plus 8k equal to 0. That's it. This will give you lambda. PQ क्या है बच्चों? This मतलब PQ ले लो, QP ले लो, does not matter. It does not matter. So this minus this कर दूं, ठीक है? This minus this कर दूं, Q minus P. So basically the calculation will give you 2 lambda plus 1 minus 1, that is 2 lambda dot 2, that is into 2 plus now minus 3 lambda minus 1 minus 0. So minus 3 lambda minus 1 multiplied by minus 3, the j component, plus now PQ का k component क्या आएगा, 8 lambda minus 10 multiplied by the k component of this, that is 8, is equal to 0. This will give you the value of lambda. किसी का आया lambda? किसी का lambda आया? Anybody could find out the lambda? अगर lambda आ गया आपके पास, so put the value of lambda here. Put the value of lambda here to find out the point Q. So that will give you foot of the perpendicular. Lambda बच्चे बोल रहे हैं 1 आ रहा है, is it 1? So lambda will come out to be 1. तो आपके पास Q आ जाएगा. You will get Q, that is 3 minus 4 and minus 2, right? So आपके पास foot of the perpendicular आ गया. Then find out PQ, that is the perpendicular distance. That's it. Clear है सबको? So just quickly see the solution. So this is the line का direction of the line. This is the point P. This is the point Q, foot of the perpendicular. M बोला है मैंने यहाँ पे. It is M, right? So what we have done? So P, we will write M first. We will write M
in the form of lambda. M in the form of lambda will be 2 lambda plus 1 minus 3 lambda minus 1, 8 lambda minus 10, as we did, right? Then we will write Pm, this minus this, yeah, this minus this, whatever you want to write. So we have written Pm. Now Pm dot this direction will be 0. So Pm is perpendicular to Am, yeah, this direction, right? So Pm dot 2i minus 3j plus 8k is equal to 0. When you solve it, once you solve it, so this is Pm, this is Pm, this thing, dot the direction of the line. When you do the dot 0, you get lambda is equal to 1, as you rightly said. बस उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास m पॉइंट आ जाएगा 3 minus 4 minus 2 and Pm आ जाएगा √24. Perfect, perfect, very good. So if you understand this, now let me take it to the next level. थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करता हूँ मैं. I hope it is clear all of you, yes or no? It is clear to all of you? सत्यम बेटा 3 minus 4 minus 2 है ना? चलो awesome. Now let's do another problem. Now let's look at this. Steps तो मैंने बता दिया आपको, तो let's not repeat it. आपको मिल जाएगा. These are the steps. Steps I have written down the steps, but it is very clear now. Anyways, Nilesh beta, math, if you're in class 11th and 12th, then don't focus on math Olympiad. If you're in class 9th and 10th, then you can focus on Olympiad, because in 11th and 12th Olympiad becomes a distraction for JEE, because the syllabus are very different. My suggestion only. हाँ, image of this point. अब image of the point on the line, same problem है but slightly different calculation. क्या करना है बच्चों? What is the problem? Line is given to you. Line is given to you. What is the line? Line is this. Now there is a point 1, 6, 3. आपको इसका इमेज चाहिए. What do you want? You want its image. सबसे पहले आप फाइंड करोगे foot of the perpendicular as it is. Say this is P, say this is Q. What you want is R. What you want is R. This is the question. So this is Q is the midpoint. Q is the midpoint between P and R. R is the image. Step same है बच्चों. सबसे पहले Q find करो. Find out Q. Same. Just for your practice. Find out Q बच्चों. कैसे करोगे? आपको पता ही है. Any point on the line can be written as, कितना हो जाएगा? X कितना हो जाएगा? लैम्डा. Y कितना हो जाएगा? 2 lambda plus 1. Keep doing calculation yourself. And Z कितना हो जाएगा? 3 lambda plus 2. Right? So this is Q. Now find out PQ. So PQ बच्चों कितना हो जाएगा? The PQ will be this minus this. So lambda minus 1 I plus 2 lambda plus 1 minus 6. So 2 lambda minus 5 J plus 3 lambda plus 2 minus 3. 3 lambda minus 1 K. You also know the direction of the line. आपको line की direction पता है? What is the direction of line? 1, 2, 3. That is I plus 2J plus 3K. Right? I plus 2J plus 3K. तो बच्चों क्या हो जाएगा? PQ dot I plus 2J plus 3K is equal to 0. Solve it to find lambda. Once you get the lambda, it will give you the point Q. Once you get the point Q, बच्चों Q आया किसी का? Q कितना आ रहा है? Lambda 1 आ रहा है. Vishnu says lambda is 1. Satyam says 107. बेटा 107 क्या आंसर है क्या? और the Q कितना आ रहा है? Royal's choice says 135. Is it? Q निकाल लो. Q 135.
सो Q आ जाएगा बच्चों 1 3 5, शायद लैम्डा आपका 1 आ रहा है, यू कैन चेक इट आउट एंड दिस विल हेल्प यू फाइंड आउट द पॉइंट R आ जाएगा आपका से 107 इज व्हाट यू आर सेइंग 107। कैसे निकालोगे बच्चों? थिंक ऑफ इट एज सम पॉइंट x1 y1 z1, यूज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर Q आपके पास आ गया, इफ द Q कम्स आउट टू बी 135, say 135 using the midpoint formula, x1 plus 1 by 2 is equal to 1, right? Of course 1 ही आएगा वो। दूसरा आपके पास क्या है y1 plus 6 upon 2, बच्चों कितना हो जाएगा? the midpoint 3, the y coordinate of the midpoint, and similarly z1 plus 3 upon 2 बच्चों कितना हो जाएगा? 5। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? x1 y1 z1। I hope it's clear all of you? So this is how you find out the image of a point with respect to a line. Image of a point with respect to a line. Clear है ये सबको? Now अब हम जाएंगे plane में। Now if these concepts are clear, I can now enter the world of plane and a line and related concepts. ठीक है, आगे बढ़े? Should we go ahead? आंसर देख लो इसका आंसर हो जाएगा लैम्डा आपके पास आ रहा है, लैम्डा विल कम आउट टू बी 1 एज यू आर राइट। Q आपके पास आ रहा था 135, Q इज 135 एंड हेंस आपके पास R आ जाएगा 107। करेक्ट, द आंसर वाज करेक्ट। ठीक है, चलो नाउ लेट्स गो अहेड। नाउ इसके ऊपर आ जाओ। नाउ द इमेज ऑफ, अब इसको पढ़ो ध्यान से। द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। बच्चों सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। सो आई विल डिवोट couple of minutes in explaining how to read this problem. पढ़ो इसको। First you read it. If the image of a point P in the plane measured parallel to a line is Q, then PQ is equal to, ध्यान से पढ़ो, read it 2-3 times. Read it 2-3 times आराम से, take your time. Image of a point in the plane. तो बच्चों ये तो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट? सो देयर इज अ प्लेन, अच्छी बात है, देयर इज अ प्लेन, राइट? देयर इज अ पॉइंट, ये भी बड़ी अच्छी बात है, देयर इज अ पॉइंट, पॉइंट P इज 1 -2 3 एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 2x plus 3y minus 4z प्लस 22 इक्वल टू 0। तो यहां तक तो मुझे समझ में आ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द प्लेन बट पैरेलल टू द लाइन क्या बोल रहा है? इमेजिन देयर इज अ लाइन, सो इमेजिन देयर इज दिस लाइन, हाँ, सो इमेजिन देयर इज दिस लाइन। इमेजिन करो एक ऐसी लाइन है, एक लाइन है, कोई तो एक लाइन है ये, ठीक है? दिस लाइन बच्चों इज व्हाट? द लाइन इज, so this line is x upon 1 is equal to y upon 4 is equal to z upon 5। तो ये एक लाइन है, दिस इज अ लाइन। इमेजिन करो ये एक लाइन है, इस लाइन की डायरेक्शन क्या है बच्चों? कैन यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन? दिस लाइन्स डायरेक्शन इज 1i 4j 5k। so you can say that this direction is, you can say that this direction is, क्या है बच्चों डायरेक्शन? 1i प्लस 4j प्लस 5k। नाउ ये तो मुझे इंफॉर्मेशन पता है, आई नो द इंफॉर्मेशन टिल हियर। नाउ देयर इज अ पॉइंट, देयर इज अ गिवन लाइन एंड देयर इज अ गिवन प्लेन। नाउ द इमेज ऑफ अ पॉइंट P इन द प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। बेसिकली आपको क्या करना है ना, यू हैव टू स्टार्ट पैरेलल टू द लाइन। क्या करो? इस पॉइंट से पैरेलल चलना शुरू करो।
with what? Start from the point P but move parallel to the given line. Move parallel to the given line, right? You will hit it at the point Q. You will hit it at the point Q, right? Right. आपको क्या चाहिए उसके बाद? You have to keep going down till the point R, which is the image. Which is the image. समझ में आया? तो थोड़ी देर के लिए इमेज को भूल जाओ. Forget about the image for some time. Let us find out the point Q. Let us find out the point Q to begin with. Question समझ में आया बच्चों? Yes or no? Could you understand the problem? Could you visualize the problem? Yes or no? First tell me this and then I will start. Ashok, within a week. I'll start the crash course within a week. आ गया? चलो, very good. Very nice. Great to see all these yes here. शुभांकर बेटा, focus once again. Now, अब मैं क्या करता हूँ? Can you write down the equation of this line? Imagine अगर ये भी एक line होती तो. Imagine if this was a line. Could you have written down the equation of this line? बच्चों, एक लाइन के लिए क्या चाहिए होता है? What do you want to create a line? One point and direction. तो direction तो ये रही. I know the direction. This direction is same as this direction. Yes or no? मैं क्या कर रहा हूँ? फिर से सुना ध्यान से. A point was given to me. I had to find out. Forget about the image. Imagine you have to find out the foot of the when you start moving. ऐसे बोलता हूँ मैं, समझ में आएगा आपको. When you start moving from the point P parallel to a given line, then you strike the plane at a point Q. Can you find the point Q? P से चलना शुरू किया parallel to the given line and you strike the plane at the point Q. Can you find out the point Q? Is the problem to begin with? मैं क्या करता हूँ? Let me start by writing the equation of this line. कैसे इक्वेशन लिखूँ इसकी? मुझे डायरेक्शन तो पता ही है. डायरेक्शन बच्चों क्या है? I plus 4j plus 5k. This is the direction of this line which is parallel to this line. Whose direction was this? यहाँ तक समझ में आता है? Now direction पता है, point पता है from which the line passes. So can I write down the equation of this line? देखो मैं इक्वेशन लिखता हूँ, ध्यान से सुनना. कैसे लिखूंगा? x minus x1, the point from which this line passes through is 1 minus 2 and 3. So x minus 1 upon direction क्या है? Direction is 1, same, is equal to y minus minus 2. So y plus 2 upon direction क्या है बच्चों? 4. Direction क्या है? 4 is equal to z minus 3 अपॉन डायरेक्शन क्या है बच्चों? 5. मैंने क्या किया बच्चों? आई रोट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू P बट इज पैरेलल टू दिस लाइन. तो पासेस थ्रू P मतलब x minus 1 y plus 2 z minus 3, but since it is parallel to this line तो उसका डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाएगा 145. सो दिस लाइन आ गई. अब तो बहुत सिंपल है. अब जस्ट लिसन टू मी व्हाट नीड्स टू डू. व्हाट यू नीड टू डू? राइट डाउन द क्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. लिख सकते हो द क्यू, दिस पॉइंट Q which lies on the line and intersects with the plane. वो पॉइंट Q कैसे लिख सकते हो? इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा. yes or no? Can you write it? yes, awesome. अगर लिख सकते हो तो पॉइंट Q आ गया. बट द Q लाइज ऑन व्हाट? द Q लाइज ऑन द प्लेन. तो इस Q पॉइंट को लेके सेटिस्फाई कर देना किसके अंदर? इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन. दैट विल गिव यू व्हाट? लैम्डा. और जैसे ही लैम्डा आया तो मतलब मिल जाएगा क्या? Q. दैट्स इट. वेरी सिंपल. समझ में आ गया? स्ट्रेटजी समझ में आई? कुड यू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हियर? क्या किया हमने?
हमने P से पैरेलल टू द गिवन लाइन वी मेड अ लाइन. कैसे? x minus x1, y minus y1, z minus z1 divided by the direction ratios of the given line, because this line is parallel to the given line. बहुत अच्छा. So this is the equation of this line passing through P intersecting the plane at Q. तो line की इक्वेशन आ गई. लाइन की इक्वेशन आ गई, then I can write any point on the line in terms of lambda. बहुत अच्छी बात है. So I can write Q in terms of lambda as we have been doing in the previous problems. Now that point Q is a special point which intersects the line and it is a point of intersection of line and the plane. So this point Q lies on the plane. So this point Q will satisfy the equation of plane. So in the place of x, y and z, put the points which are in terms of lambda. सॉल्व कर दो, लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा तो क्यू आ जाएगा, और क्यू आ जाएगा तो इमेज आर भी आ जाएगा यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला. वेरी सिंपल, दैट्स इट. एनीबडी एनी कंफ्यूजन? समीर हैज सम कंफ्यूजन. बेटा बताओ व्हाट इज द कंफ्यूजन. आफ्टर दैट वी विल सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम ऑफ जेई. अरे मत डरो बेटा. अश्मित डोंट वरी. समीर व्हाट्स योर कंफ्यूजन? कैन यू एक्सप्लेन? Sir, how to approach Cengage book for vectors in 3D? Beta, first do the basics. Vankalya Raghuram, what you should do is first at least do revise my classes, then do R.D. Sharma's subjective, at least the solved examples, and then go and do any book like Cengage or Arihant. ठीक है? ठीक? What is your rank? Hussain. किसके अंदर? JEE में? I gave JEE long back when the paper used to be subjective and very tough. My rank was 560. हाँ, and don't do the mistake which I did. I didn't study chemistry at all. I left the entire inorganic chemistry. ऐसी बेवकूफ़ी मत करना. Now I always say more than math, chemistry is important. Chemistry is going to give you more marks. So do the divide time between your subjects very judiciously. Ensure chemistry is your strongest subject. ठीक है? Because you can solve the chemistry paper of JEE 100% with 100% accuracy, which is impossible in the paper of math. है ना? ठीक है, आ जाओ. तो ये तो मैंने सॉल्व कर दिया. दिस वी हैव सॉल्व. आंसर आएगा 2√42. ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े. नाउ लेट्स लुक एट दिस. नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम. द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1-59 from the plane measured along the line this. Same problem. Do you see 2017, 2016 and in 19 also you see same problems getting repeated a lot. So if you understand the problem, then your marks in JEE is guaranteed. So if your concepts are clear, guaranteed marks हैं, पर पक्का marks आने वाले हैं. ठीक है? So solve this problem on your own. Do it, then I'll explain. Do. I want all of you to start doing it. Riya Iyer will revise the same concept once again, don't worry. And Aryan Jagdale, यार inorganic boring होगा, I agree. For me it was boring, but बेटा कड़वी दवाई है, पी लो, right? Because that is going to give you more marks than any other thing, है ना? So inorganic super important. More important than anything in math, trust me. So is organic, so is everything. हो गया? Rahul says हो गया. Okay, so what are we going to do here? Quick, मैं diagram बनाता हूँ, you guys start solving it. Distance of the point this from the plane, this is the plane, right? So quick diagram, always make a diagram बच्चों. Never ever solve a problem without a diagram till the time your concepts are super clear, right? So बोल रहा है कि there is a point P 1-59. आपको चाहिए distance of the point P from the plane but measured along the line this. So there is a line which is say this is a line, right? So this line is
x upon 1 is equal to y upon 1 is equal to z upon 1. You have to go along this line, so you have to go parallel to this line, right? This is the point Q, right? If you go parallel to the given line, this is the point Q. I hope you can visualize. So I am traveling from P parallel to the given line. So what is the step, bachcho? You start by writing the equation of the given line. So what is the equation of this line now? What is the equation of this line? क्या करोगे? Passes through this point but parallel to this line. So direction ratios are 1 1 1 but passes through this point. तो line की equation लिख सकता हूँ मैं x minus 1 upon 1, y minus minus 5, y plus 5 upon 1 is equal to z minus 9 upon 1 is equal to lambda, right? So this is the equation of the line passing through P but is parallel to the given line. Now Q बच्चों कितना हो जाएगा? Q will be lambda plus 1 comma y बच्चों कितना हो जाएगा? lambda minus 5 and z हो जाएगा lambda plus 9. So this is my point Q, but the equation of the plane was x minus y plus z is equal to 5. But the point Q, it lies on the plane. So this point will satisfy the equation of plane. So this point will satisfy the Q is the point of intersection between the line which passes through P and is parallel to the given line. So Q lies on the plane, so this point satisfies the equation of plane. So x की जगह ये, तो बच्चों कितना हो जाएगा? lambda plus 1 in the place of x this, in the place of y minus lambda minus 5 in the place of z lambda plus 9 is equal to 5. सॉल्व करोगे तो आपके पास लैम्डा आ जाएगा. बच्चों लैम्डा कितना आ रहा है? लैम्डा विष्णु सेज -10. विष्णु सेज -10. आई होप इट इज करेक्ट. सो लैम्डा आपका -10 आ जाएगा, राइट? सो दिस विल अगेन पुटिंग द वैल्यू बैक हियर विल गिव यू क्यू. बच्चों क्यू कितना आ जाएगा? क्यू आ जाएगा, व्हाट इज द क्यू? क्यू बता दो फटाफट, मैं लिखूं क्या? -10 plus 1 -9, राइट? -10 -15 हो जाएगा एंड -10 plus 9 is -1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. -9 -15 1, तो P आ गया और Q भी आ गया. Q आ गया -9 -15 -1. सो P पता है, Q पता है, फाइंड आउट द डिस्टेंस. आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस. PQ, you want the PQ, find out the distance, right? Find out the distance. Clear? Same thing. So this is the equation of line which is passing through the P and is parallel to the given line. So the point लिख दिया lambda के फॉर्म में, but point lies on the plane. So putting it on the plane, lambda आपने बताया -10, -9, -15, -1. So required distance आ जाएगा 10√3. Answer is B. Answer is B. Yes, you are right. Answer is B. Answer will come out to be B. ठीक? Awesome. Now, do you want to do a last concept? One last concept, बच्चों. Yes, R.D. Sharma Subjective Uncle is a very good book for the basics, at least in vectors and 3D. If you do the solved examples, your concepts will be super clear. उसके बाद में revise the problems which I have done in the class here. After that, solve the previous year JEE problems. It is actually more than sufficient. After that, if you have time, only then go to Cengage or Arihant. Otherwise, this is sufficient. Because you have to do chemistry and physics also. है ना? चलो. Now, perpendicular, last concept बच्चों. Last concept, but a very quick way to remember it. I will start by 2D coordinate geometry.
बच्चों सुनना ध्यान से, द रिजल्ट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन विच यू लर्नड इन द क्लास 11th एंड द रिजल्ट्स ऑफ द प्लेन आर वेरी मच सिमिलर. ठीक है, अगर आपको याद हो, इन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इक्वेशन ऑफ एनी लाइन वाज ax प्लस by इज इक्वल टू c लिख सकते थे, या ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 लिख सकते थे. This was the equation of straight line, yes or no? Right? Now, any point x1, y1, the perpendicular distance of the line from perpendicular distance of P from a given line. इसका फॉर्मूला याद है किसी को? क्या आता था? Deshan says, I saw you in Guwahati. क्या बात है? Yes, I was there in Guwahati. ओके, क्या होता था फॉर्मूला? ax1 प्लस by1 माइनस c का मॉडुलस डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? यस, है ना? अगर आपको ये याद है तो द रिजल्ट फॉर द प्लेन ऑल्सो इज द सेम, राइट? सो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू द रिजल्ट्स ऑफ द प्लेन. Formulae which are extension of 2D geometry. So I am talking about certain formulae which are just extension of the straight line के formulae in 2-dimensional coordinate geometry which you learnt in class 11th. है ना? नहीं बेटा, C कोई फर्क नहीं पड़ता मोहम्मद अरबाज, whatever is the C does not matter. Let me show you. So perpendicular distance from origin to a plane is मॉडुलस ऑफ d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ठीक है, वॉट इट यूज टू बी फॉर द स्ट्रेट लाइन? फॉर द स्ट्रेट लाइन इट यूज टू बी दिस. फॉर अ स्ट्रेट लाइन क्या होता था? अगर एक लाइन है ax प्लस by इज इक्वल टू c, मान लो इफ दिस वॉज द स्ट्रेट लाइन एंड इफ दिस वॉज द ऑरिजिन, देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of any line in 2-dimensional coordinate geometry from the given line, origin से perpendicular distance used to be modulus of c upon under root of a square plus b square. That is constant term की positive value upon under root of a square plus b square. Actually everything should be positive. Why? Because it is a distance. This is a distance, right? Distance is always positive. So constant upon under root of a square plus b square was the distance from origin of a straight line, right? For the plane it is what? For the plane बच्चों क्या हो जाएगा? The constant divided by the coefficients of a b, coefficient of x y z के squares का summation. So modulus of d upon under root of a square plus b square plus c square. Same. ठीक? ओ यस ममता मोहपात्रा, यस यू आर राइट. इतना कर लो, बहुत है. ठीक, क्लियर? नाउ आगे बढ़े. सो दिस इज वन. सिमिलर रिजल्ट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन. एग्जैक्टली व्हाट आई जस्ट सेड इन द प्रीवियस पेज. क्या हो जाएगा? ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन दिस. पॉइंट को प्लेन में रखो. Sorry, so this is the plane, this is the point x1 y1 z1. The plane is ax plus by plus cz is equal to d या plus d equal to 0, whatever, right? क्या करोगे? In the numerator put this point in the equation. What we are finding is this perpendicular distance, right? So put this point in the equation of plane, that is your numerator. Ensure you make it positive because it is a distance. So put mod upon under root of a square plus b square plus c square. Actually these two results are same, क्योंकि only difference between these two results is कि यहाँ पे आपका x1 y1 z1 बच्चों क्या हो जाता है? That actually is nothing but origin 0 0 0. So distance from the point 0 0 0 is 0 0 0 d upon this. तो ये आ जाएगा रिजल्ट.
एग्री? एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट बच्चों? कुड यू अंडरस्टैंड दीज रिजल्ट्स? ऑफ कोर्स कुल गौरव, माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विथ यू. सबके साथ मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगी यार, वरना मेरा काम ही क्या है. ठीक है, मोर देन मैथ, माई एटलीस्ट आई कैन विश अ लॉट फॉर यू गाइज, राइट? ठीक है, एनीवेज, सो दिस इज द रिजल्ट. अब आ जाओ सीधे इस प्रॉब्लम को देखते हैं. नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम बच्चों. दिस इज JEE Mains 2013. सी you actually get a lot of direct result problems in 3D also. Look at this, the distance between this plane and this plane. But उससे पहले ये देख लो, shortest distance between two planes. बच्चों देखना, ध्यान से सुनना इसको, बहुत ध्यान से सुनना इसको. So there is a plane, right, and there is another plane. The shortest distance between the two planes is a line which is, it is along a line which is parallel to, which is perpendicular to both the planes, right? So इसकी इक्वेशन है, मान लो आपके पास क्या, इसकी इक्वेशन है आपके पास ax, अच्छा सॉरी, दो पैरेलल प्लेन्स है तो और भी सिंपल हो गया. लेट मी डू टू पैरेलल प्लेन्स, इट इज अ मोर सिंपलर वन. सो इमेजिन देयर आर टू पैरेलल प्लेन्स, देखना ध्यान से, right, two parallel planes, and what do you want bachcho? You want the perpendicular distance between the two. Very simple. So imagine this was origin. Origin से पहले वाले का, this is the plane 1, this is the plane 2. Its equation is ax plus by plus cz is equal to d1. एग्री? सो प्लेन 1 प्लेन 2, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए. इट इज वेरी सिंपल, द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम ऑरिजिन माइनस डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम ऑरिजिन. बस दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दोगे, यू विल गेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू. सो इट्स सो सिंपल. क्या हो गया? द इफ दिस वाज O, व्हाट इज OP1? व्हाट वाज OP1 बच्चों? OP1 वाज मॉडुलस ऑफ D1 upon under root of a square plus b square plus c square. What is OP2? OP2 was this. So what is बच्चों P1 P2? Distance between the two parallel planes. बहुत सिंपल है, कितना हो जाएगा बच्चों? D1 minus D2 upon under root of a square plus b square plus c square. Very simple. Got it? समझ में आया? ये आपको कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? So when you talk about the perpendicular distance between two planes, actually it is the subtraction of their perpendicular distances from the origin. Hence it is d1 minus d2 upon under root of a square plus b square plus c square. ठीक है, समझ में आया? So that is why, so producing music series, what's your name? बेटा तुम्हारा नाम कैसे लूँ मैं? Nidhi, my sprint is going to start within a week's time. More details on it. Integer type or weak. बेटा प्रॉब्लम ही तो सॉल्व करना है, बीट इंटीजर टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप डज नॉट मैटर. Don't get scared with it. So now the problem. If you see this problem is exactly the same, but there is a slight trick. There is a slight trick. ये लिखा है आपके पास, देखो, this is ax plus by plus cz is equal to d1, right? One plane, the other plane is, try to write it exactly with the same ABC, with the same ABC. So don't write it like this. आप इसको कैसे लिखो बच्चों? Both the planes are parallel because the coefficients of x, y and z are the same. How? कैसे? Divide by 2. तो बच्चों कितना हो जाएगा? 2x plus y plus 2z plus 5/2 is equal to 0. Now this looks like what? इसको भी उधर ले जाता हूं. Now it looks like ax plus by plus cz is equal to d2.
Agree? So what is the perpendicular distance between the two? So distance between the two कितना हो जाएगा? Distance between the two is equal to modulus of d1 minus d2 upon under root of a square plus b square plus c square. Agree? बच्चों क्या हो जाएगा? उसका d कितना है? 8. So 8 minus 5 by 2. Agree? Upon under root of 2 square plus 1 square plus 2 square. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? वर्षा सेज आई एम वीक इन 3D. बेटा रिवाइज माई क्लासेस, एटलीस्ट कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. देन सॉल्व द प्रॉब्लम्स फ्रॉम आर डी शर्मा सब्जेक्टिव, देन डू प्रीवियस ईयर जेई की प्रॉब्लम्स. दैट्स इट, मोर देन सफिशिएंट. ठीक है. सो रॉकी, my next chapters will be the revision classes now. I will take the revision classes of entire 11th and entire 12th starting within a week's time. My 45-day sprint that I am going to start within a week. More information on it in next 2-3 days. ठीक है? Cool. Awesome. चलो, I hope ये हो जाएगा. तो इसका आंसर आएगा बच्चों 7/2. Answer is B. Awesome. So बच्चों, this is a lot about the vectors and 3D. Now while doing my 45-day sprint, I will also revise vectors in 3D once again. But there, more than the concepts, I will focus on the problem solving. So ensure your concepts are clear. ठीक है बच्चों? So are you geared up for that sprint coming up? Yes or no? पूरा revise करेंगे. In 1 or 2 classes, we will revise 1 chapter. That's it. ठीक है? And I will take problems in such a way कि वो प्रॉब्लम्स और वो कंसेप्ट्स कर लो, जेई के मार्क्स पक्के हैं. योर मार्क्स इन जेई इज मोर देन गारंटीड. आई हैव डन वेरी डीप रिसर्च ऑन व्हाट कंसेप्ट्स आर आस्क्ड इन जेई एंड आई विल फोकस ऑन ओनली दोज कंसेप्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आस्क्ड इन जेई मेंस. ठीक है. चलो, ऑसम. 3D ज्योमेट्री इज इंटरेस्टिंग. यस, यू आर राइट. गणेश. विष्णु, व्हाट इज द टाइम ऑफ ईच सेशन? ऑलमोस्ट 1 hour to 1 hour 30 minutes. ठीक है. व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम? अरे बेटा पढ़ लेंगे. चलो, ऑलराइट बच्चों. सो ऑन दैट नोट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. एंड बच्चों, ऑन वेदांतु ऐप you can get all the PDFs available of my classes, as well as the PDFs are available on the Telegram group. Telegram group ka link is there in the description. Through that you can join the Telegram group and ask a lot of doubts there as well. Alright bachcho. And on that note, as I always say, I'll end my class by saying what? क्या करते हैं बच्चों? A beautiful smile on your face. This is the most beautiful graph. Y is equal to x square. Have that on your faces. यही है real success. Keep smiling as you work hard to achieve your dreams. But working hard is the real success बच्चों. जो रैंक आएगी देखी जाएगी. ठीक है. But if you have worked hard, if you were focused, if you are determined, then this is the real learning of life and that is the real success. Trust me. Not your rank in JEE. JEE की रैंक जो की देखी जाएगी. Don't worry at all. कुछ फर्क नहीं पड़ता. It's okay. Cool. चलो. Belated happy Diwali to all of you and enjoy. Bye bye. See you. More details about my upcoming sprint in next 1-2 days. Bye.